Good evening, guys. Just wait for the host to join. So, Bhaskar, you are also from Chhattisgarh. And what about Sujita? Both are from Chhattisgarh, Yes, right? sir, from Chhattisgarh. Can you hear me? Can you hear me, guys? Yes, sir. Yeah. So you're from Chhattisgarh, Bhaskar. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about Sujita? Sujita also same college, different college. Same college, sir. Oh, all from same college. Okay. Cool. It comes under which university? CSU2, sir. कौन सा university? CSU2. CSU2. Okay. Yeah, I don't have access to share the screen, so just waiting for it.
Any doubts so far in transformer? So we'll just start DC machines today. So that is needed. I mean, for rotating machines, DC machine वो basics है. पहले वो खत्म करेंगे, बाद में और बाकी machines देखेंगे. ये परवाजी हो सब तो हो गया ठीक है. I think now I have the access. Yeah. Right. So DC machines. फर्स्ट रोटेटिंग मशीन है हमारा. इसमें डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों डिस्कस करना पड़ेगा. सो इसी द डीसी जनरेटर फर्स्ट वन. जनरेटर क्या करेगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब जनरेटर मैकेनिकल रोटेशन होना चाहिए रोटर. सो उधर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा स्टेटर के ऊपर. और मतलब हाउ दिस इज कंस्ट्रक्शन इज इट रिवर्स आल्सो. Voltage can be generated at rotor also, right? So we'll see how the construction is here now in DC generator. So इसमें I have something called, as I mentioned, transformer. Transformer में बता दिया voltage generate के लिए magnetic field चाहिए और conductor चाहिए. ठीक है, लेकिन इधर magnetic field is stationary here now. So this is how I have the stationary magnet, and north and south poles are there. And this is not ये वाला unipolar magnets नहीं. इधर kind of two magnets have taken, north south वाला. लेकिन हमारा interest क्या है? One pole is here now, north, the other one is south here. So other side south here, other side north will be there. So now this is how I have. Right. So what happens is flux is generated here now from north to south. This is how the flux is kind of going there, main flux. And all the way. And some flux will be kind of going here through this one. This is called yoke. So flux is जाएगा through yoke, will come back. Closed lines है ना. Magnetic flux lines are closed lines. इसलिए इसमें जाएगा. Something like this. So now this is called as a stator. Called as stator. Now poles are fixed. Magnetic pole stator के ऊपर है. अभी rotor देखना पड़ेगा. So voltage generation के लिए मैंने बता दिया already. Conductor चाहिए, magnet चाहिए. Magnet तो आ गया. Magnet is stationary here. So what I do here now, this is a rotor. So this rotor is called, this one is a rotor. Here rotor is armature. आर्मेचर का मतलब क्या है, जहां पे हमारा कंडक्टर्स प्लेस करेगा, दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ आर्मेचर. सो इधर क्या करेंगे, आर्मेचर मतलब सर्कुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. सो नॉर्मली दिस इज हाउ द आर्मेचर विल लुक like this, so that side we have kept, so that conductors we can keep it here now. Conductors इसके अंदर रखेगा. These are called slot, and this is teeth here now. So for now what I am doing is I am taking only one coil here now. मतलब conductor, two conductors. Terminologies, इधर terminologies देख लेना पहले. Terminologies what I am saying is coil, single turn coil, and multi-turn coil, and conductor. Conductor means one wire, normal simple wire.
say of this length, this is called as a conductor, or otherwise you can say vertical one, this is called as a conductor. And coil means coil will have two sides, means single turn coil. Look at here now, this is one conductor and another conductor is here now, both are kind of joined here now. This is called as a single turn coil. एक ही टर्न है ना. मल्टी टर्न कॉइल मतलब क्या होता है? मल्टी टर्न कॉइल मतलब this is one coil, single turn coil. Multi turn means एक और टर्न आएगा, one more turn here now, something like two turn either, or if you want one more turn I can have three turn coil. So this is three turn coil, this is a multi turn coil. Conductor one conductor है, single turn coil में कितना conductors है? Can I say ये वाला एक turn है ना, मतलब एक turn coil है, इसमें कितना conductors है? इधर Z equal to 1, इसमें कितना है Z? Z equal to 2, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, Z equal to 6 है. So now what I am taking here now, having said this, I'll take a single turn coil. So how the EMF is induced in a single turn coil? You can see here now, EMF induced in single turn coil. So I kept a one coil here now, एक कंडक्टर इधर अंदर रखा है, दूसरा कंडक्टर है, दोनों joining connection. Now mechanical energy has to be electrical energy, it has to convert. तो अभी क्या हो रहा है? Let the rotor rotate. So a rotor ये वाला है ना, rotor rotate in a clockwise direction. Whatever the rotation we can do. So I am making it as a clockwise rotation. Any doubt? निकल जान Basket, mute yourself. Okay, I made mute. So ये क्या clockwise में rotate हो रहा है? Just try to rotate in the clockwise direction. Then what happens? There is no voltage here now. The voltage is induced. Principle, Faraday's laws of electromagnetic induction. Principle is Faraday's laws of electromagnetic induction. E equal to minus n d phi by dt. Already इसके बारे में discuss कर दिया ट्रांसफार्मर में. Or you can say here now E equal to BVL sin theta. E equal to BVL sin theta मतलब flux density, velocity, length, sin theta. Theta here now. If you assume this is theta equal to 0, ये वाला theta 0 है, क्योंकि magnetic flux conductor kind of tangential here now, theta 0 position. So sin 0, you don't get any voltage here now. So let me show the scenario, theta equal to 0. Okay, first write here now, principle. Transformer works on the Faraday's laws, is given by transformer works on the Faraday's laws, E equal to minus n d phi by dt, और B equal to BVL sin theta. दोनों बराबर है. Now at theta position voltage क्या है? Just please understand the voltage in these conductors. So I am making these conductors as, say this is A and A dash. No voltage either, theta 0 position में. I am just redrawing it. Conductors are here now, north and south pole. Rotation clockwise, rotating at a speed n. Since theta equal to 0, no voltage is induced. A and A dash, so E A dash is 0. Now at theta equal to 90 degree, मतलब रोटर रोटेट हो रहे हैं ना, आर्मेचर रोटेट हो रहे. क्यों रोटेट हो रहे? क्योंकि हमने रोटेट कर रहा हूँ, हम खुद ही रोटेट कर रहा हूँ उसको. सो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूँ रोटर को. सो क्या आ जाएगा? जस्ट सी हियर नाउ, नॉर्थ एंड साउथ पोल रोटर रोटेट हो रहे, ताकि आपका कंडक्टर इधर आएगा अभी. सो रोटेशन इस जा रही. ठीक है. सो अभी क्या होगा? EMF is induced. A, this conductor is A, ऊपर वाला A है ना, तो नीचे आएगा. This is A and ये वाला A dash है. So what is the voltage induced here now? To know the direction of the EMF here now, to know the direction of EMF, I use a Fleming's right hand rule.
व्हाट डज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से? समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें वोल्टेज कौन सा डायरेक्शन में जाएगा या फिर करंट कौन सा डायरेक्शन में जाएगा वो पता चलेगा जब आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेगा। क्योंकि मैंने बता रहा हूँ इधर वोल्टेज आ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि E इक्वल टू बी वेल साइन थीटा, अभी थीटा 90 है तो इसमें वोल्टेज आ जाएगा इधर। सो मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा अंडर द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो मैग्नीट्यूड ठीक है पता है। तो डायरेक्शन करंट बाहर से अंदर जाएगा नहीं तो अंदर से बाहर आएगा, उसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। सो आई यूज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हियर नाउ। Just see the Fleming's rule, right hand rule says that keep the right hand forefinger and center finger and thumb. You can see here now. I have this one right hand. Okay, right hand लिया मैंने, forefinger, center finger, thumb तीनों right hand में. So ये forefinger है ना field का direction में रखो. So this is how I'll keep it here now. Forefinger north pole है, north pole से flux आएगा. Rotation, thumb पता है, rotor conductor का direction है. So कैसे जाएगा? ऊपर जा रहा है A dash वाला. So ये देखो how the current or the EMF current is into the plane. So this I can say this is into the plane. Similarly ये वाला ये देख लेना, ठीक है? Magnetic flux is same direction left to right. Rotation क्या है? Rotation नीचे आ रहा है, rotor नीचे आ रहा है ना, तो you can see the current or the EMF here now coming out here. So I assume EA dash this one is positive, मतलब मान लो ये बाहर आ रहा है तो वोल्टेज पॉजिटिव मान रहा है, जस्ट assumption. बाहर आ रहा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ले रहा हूं, सो अंदर गया तो नेगेटिव लेना चाहिए, ठीक है? ये डैश ये डैश इस तरफ हुआ तो पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है? तो राइट ऑन दिस स्टेटमेंट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. व्हाट इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? कीप द forefinger, center finger and thumb of right hand mutually perpendicular. Right? Keep the forefinger, center finger, thumb of right hand mutually perpendicular. If forefinger represents field direction, thumb represents rotation of conductor. Forefinger represents field direction, thumb represents rotation of conductor. Hence, the center finger represents EMF direction. Center finger represents EMF direction here, voltage direction. So, FRS से क्या मिलेगा हमको? FRS से direction of EMF can be obtained. ठीक है यार. Next one, theta equal to 180. तो further rotate हुआ तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, ये डैश ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा. So this is A dash, this is E. Voltage क्या है इधर? Voltage exactly this is 180 degree. We call it the magnetic neutral axis MNA. So voltage EA dash is 0. Theta equal to 270 next position है. So अभी क्या होगा? ये नॉर्थ पोल के नीचे आएगा, रोटेशन. This is A and this is A dash. So rotation is like this. ये वाला. So tell me here now again Fleming's right hand rule use करो. Voltage क्या है? ये and this is A and A dash. ये वाला A dash है, don't get confused. A dash है. इसका डायरेक्शन क्या है? Voltage will be same. Fleming's right hand rule. Same. ये डैश नॉर्थ पोल के नीचे सेम डायरेक्शन में जा रहे. अभी ये नॉर्थ पोल के नीचे सेम डायरेक्शन में जा रही. सो ये वाला इनटू द प्लेन आएगा, ये आउट ऑफ द प्लेन आएगा. तो अभी ये डैश क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये डैश ये बाहर आ रही तभी पॉजिटिव आ गया, अभी ये अंदर जा रहे तो ये नेगेटिव होना चाहिए. Again 360 is this one. So the EMF induced here now. So EMF induced here, you can see here now. What is the shape you can say?
So this is E dash, and ये वाला theta है. So EMF induced in conductor A dash is sinusoidal. This is 90, and 180, 270, 360, and 0. So you can see here now, this is how alternating in nature. So statement here now, EMF induced in the single turn coil, EMF induced in a single turn coil of DC generator is AC. I repeat the point here. DC generator में voltage जो भी induce हो गया single turn coil में ACR है. Please note down that point, please. EMF induced in single turn coil, EMF induced in single turn coil in DC generator is AC, alternating current. So हम करना क्या अभी AC को DC करना. So we have something called commutator here now. Commutator से AC to DC conversion हो जाएगा. Let us see here now. Commutator action. ये वाला AC waveform आ गया. AC can be converted into DC using commutator. Please mention that point. AC voltage can be converted into DC voltage. AC voltage can be converted into DC voltage by using commutator. Commutator is nothing but a simple bangle. So simple like a copper copper bangle, copper ring with the kind of cuttings. Some breaks will be there. So I'll show you here now in a second. Okay, so here it is. But, yeah, commutator is something like this bangle. How this will really, I'll cut this one into two pieces. So this will be one segment, this will be other segment here now. So let us see, let me draw first here now how it looks like here. So then I'll show you. So commutator क्या ये करना क्या हमने देखा AC आया DC to DC करना है अभी, ठीक है. उसके लिए क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन में not then so this is armature we have drawn already. So your conductors are placed here now. See, this is A dash. Commutator is placed on top of the front side of this armature. Armature is cylindrical structure. So this is the commutator here now, like bangle like structure with a segment. So this is a CS1 commutator segment 2. Now I'll connect this conductor A to CS2, conductor A dash to CS2 here, CS1 and CS2, and we keep the brushes on top of this and you tap on.
Look at the setup here now. Armature is there. It's a normally cylindrical structure. This is the cylindrical structure. Round one marker or pen देखो, ठीक है? And the back side is, or the front side. मान लो ये वाला front side है, marker का front side है. So we have a small cylindrical structure one. This is a commutator front side with some brakes. So what I am doing here now, एक conductor इधर रखा, दूसरा conductor इधर रखा. ये दोनों conductor इसको connect कर रहा हूँ. ये conductor इधर आएगा, नीचे से conductor इधर connect करेगा. ठीक है, ये commutator है. Commutator के ऊपर, ये commutator के ऊपर ब्रश आएगा, मतलब इसको अटैच करने के लिए एक ब्रश है, दूसरा ब्रश है, समथिंग लाइक अटैचमेंट है. सो अभी क्या होगा, जब हमारा रोटर रोटेट होगा, आर्मेचर रोटेट होगा, उसके साथ कम्यूटेटर भी रोटेट हो जाएगा, लेकिन हमारा ब्रशेस फिक्स्ड है. सो दिस बैंगल इज रोटेटिंग कम्यूटेटर, बट ये हमारा हाथ, इवन हैंड्स और द ब्रशेस विल बी काइंड ऑफ फिक्स्ड. ठीक है. So then what is happening here? What are all rotating? What are all fixed here now? One is armature. What are rotating? Rotating parts are armature, blue one, and the commutator segments, right? These are rotating. And fixed. Brush is kind of not rotating. Brush is not rotating. Having said this, how the next position will be? Next position कैसे होगा यार? Theta equal to 90 में clockwise rotation है ना ये वाला. So what will happen? By the way, what is the voltage here now? Brushes B1, B2. Conductor में voltage नहीं है, इधर voltage नहीं तो इधर voltage नहीं है, brush में भी voltage नहीं, पूरा connection है ना. So E B1, B2 is 0. Theta 90 में क्या हो रहा है? So let us see here now. Same north and south. ये rotate हो रहा है ना, clockwise में rotate हो रहा है. So conductor इधर आएगा. Say this is A dash. ठीक है. Commutator segment मैंने बताया, commutator segments are kind of rotating here now. So what we can do here, one normally the connection will be something like this. I'll show you. So commutator segment, ठीक है. आपका brushes same thing, nothing changing. Yeah, brush is here now, brush is here now. This is CS1, this is CS2, same thing. So now the commutator segments also rotating. So then what will happen here now? ये आया, A dash आया, commutator segment भी rotate होगा. So इसका direction देखो, commutator segment ये है ना, bangle जैसे वाला अभी इस तरफ ऐसा आएगा. तो इसके ऊपर brushes है ना, brushes positions are fixed. Brush का position fix है, इधर brush है, इधर brush है. ठीक है. Conductors are connected to commutator segment. ये वाला conductor green line is connected to commutator segment, and you can see here now A is connected to commutator segment. Now brushes से हम tap कर रहे हैं voltage. Brushes positions are fixed. So अभी देख लो तो क्या होगा, current A dash में current direction क्या होगा? We know the direction of A dash, rotating in the clockwise. Fleming's FRH देखा हमने, FRH देख लिया ना, Fleming's right hand rule. So ये वाला into the plane होगा, ये वाला out of the plane होगा, Fleming's right hand rule. So conductor से commutator segment का आएगा, commutator segments के brush को आएगा, brush से हमने tap कर रहा, समझ में आ गया? So अभी मान लो EA dash, not EA dash, I'll take B1, B2. Tell me B1 किसको connection कर दिया है? B1 is connected to into the plane one. Now we can assume into the plane as positive or whatever it may be. You can assume into the plane as positive. So now I got a into the plane B1, B2. So this becomes positive, assuming into the plane is positive. Previous case, out of the plane positive considered there. No problem. Whatever you can do, if you want, whatever the assumption you can consider. So theta equal to 180 केस में क्या होगा?
Look at here now. So far no change. Even the commutator is kept. Without commutator is kept. इन दोनों में फर्क नहीं पड़ रहा है अभी तक 180 में भी फर्क नहीं पड़ेगा. पहले कितना आया अभी उतना भी आएगा. सो तो क्या होगा? कंडक्टर ऊपर जाएगा. ये वाला कंडक्टर, दिस इज ए डैश है. ये कंडक्टर, द कम्यूटेटर सेगमेंट कैसे रोटेटिंग है ना, तो अभी ये आएगा. लुक एट दिस वन. व्हाट इज दिस? इज 2 कम्यूटेटर सेगमेंट 2. ये वाला 1 है. सो अभी क्या होगा? दिस इज 2, दिस इज 1. ओके, एंड ए डैश इज कनेक्टेड टू 2. वो वाला कनेक्शन कभी नहीं मिसप्लेस नहीं होगा. A is connected to 1 and your brushes are here now. What is the voltage? A dash में voltage नहीं है, so brushes में भी voltage नहीं आएगा. B1 B2 का voltage is 0. So now you see here, this is the critical one. Please understand carefully. 270 अभी तक no difference है. अगर आपने A dash को A dash मान लिया 0 इधर, A dash, if you assume this A dash or A dash A, whatever it may be, A dash A, I'm assuming A dash A is positive. Here A dash A is 0, no difference. ब्रशेस में टैप कर रहे सेम वोल्टेज आ रहे, कंडक्टर के बीच में टैप कर रहे सेम वोल्टेज आ रहे, दोनों सेम है. लेकिन ये 270 में देख लो क्या हो रहा है इधर. 270 में वेरी क्रिटिकल वन, नॉर्थ एंड साउथ, एंड ये वाला आर्मेचर है. सो अभी इधर आएगा क्या? A डैश एंड ये वाला A, and your commutator segments are here. Okay, and this A is connected. Look at the connection. This is 1, this is 2. A is connected to 1, A dash is connected to 1, that is not changing. And then your brushes are same position and you are tapping here now. ये वाला B1 है, B2 है. देखा अभी इधर B1 कौन सा कंडक्टर में कनेक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड. इधर वोल्टेज नहीं है न्यूट्रल एक्सिस में. ये का वोल्टेज कैसे होगा? ये वाला क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है. सो इसका वोल्टेज कैसे? FRH फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की वजह से वोल्टेज कैसे होगा? ये वाला कैसे होगा? रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इधर देखो A डैश रोटेटिंग क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल के नीचे, हियर A डैश रोटेटिंग क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल के नीचे. सो सेम पोलैरिटी आना चाहिए. ओनली द थिंग इज कंडक्टर्स आर चेंज, लेकिन प्रिंसिपल विल नॉट चेंज. समझ गए ना? प्रिंसिपल विल नॉट चेंज. सो दिस विल बी into the plane, this is out of the plane. So B1 में voltage अभी into the plane A के वजह से आ रहे, तो which is into the plane, so no problem. B1 B2 will be positive here. I'm not tapping. See, for example, if it A dash A, if we consider A dash is out of the plane, so this becomes negative. So I'm not tapping the voltage across the conductor. कंडक्टर के बीच में और टर्न के बीच में, कॉइल के बीच में वोल्टेज टैप किया तो एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा. बट आई एम नॉट डूइंग दैट. रादर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग अक्रॉस द ब्रशेस पॉजिटिव, हियर 0, ये वाला पॉजिटिव, 360 वाला, दिस इज 360 पोजीशन हियर. सो मींस कम्यूटेटर में ऑलवेज वोल्टेज अक्रॉस द ब्रशेस, कम्यूटेटर अप्लाई कर दिया तो ऑलवेज वोल्टेज अक्रॉस ब्रशेस पॉजिटिव. सो अभी क्या हो गया देखो, just see here now what is happening. So I'll draw this one. This is wave previously I got it without commutator. Voltage across A dash A or A dash. Now what is happening now with the commutator?
वोल्टेज इज अक्रॉस B1 B2. अभी क्या हो गया, वोल्टेज इज लाइक दिस, सो AC to DC आ गया 0, 180, 360. So without commutator, this is with commutator. So you just copy this one. Commutator action. What is the purpose of the commutator in DC machine? It converts the DC to AC to DC in case of generator. It converts DC to AC in case of motor. मोटर में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी क्या है, लेकिन DC तो हमारा DC यही नहीं है, ये वाला DC नहीं है. DC मतलब क्या होना चाहिए? DC should be a straight line, something like this one. DC means a straight line आना चाहिए. So how do you obtain this one to from pulsated DC to ये वाला straight line DC? How do you do that? I'm just clearing it. So to make that, for example, instead of 2 commutator segments, you make the 4 commutator segment. What will happen here? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक कॉइल आपने रखा, एक कॉइल की वजह से आपको वोल्टेज ऐसा आ गया. If you keep one more coil here now, for example, this conductor, say BB dash. If you keep this one, BB dash here now. So what will happen, BB dash? This B is now under north pole. So when A or A dash voltage is 0, BB dash का voltage maximum है. समझ गए मेरा बात? Are you understanding? If 2 coils are kept, the voltage will be something like this. Let me show here now. So here, when A is 0 voltage, BB dash is maximum. Rotation karo. When A is maximum, B will be 0, provided another coil is kept after 90 degrees apart. समझ गए ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ? So then your voltage will be voltage across E, B1, B2 if 2 coils. If 2 coils are kept, अब it will be 1 coil रख दिया तो B1, B2 क्या हो गया? B1, B2 का voltage ऐसा आ गया. This is 1 coil, coil 1. Same 360 में, I can't do anything. I can't increase this. 180, 360 में. This is because of coil 1. If you make the another coil, I told you already, when 0 because of A dash, BB dash maximum आएगा. And this is how it will be. You can see here. Second coil. If you combine these two, combine करना है दोनों, combine कर दिया तो कैसे आएगा? Voltage across B1, B2. 2 coil है ना? First coil green वाला, blue one is because of coil 2. This is coil 1. दोनों coil series में connect कर दिया. कैसे connect करना अभी दिखाता हूँ आपको. So ये दोनों add कर दिया तो अभी कितना voltage? Not 0 definitely starting में ये voltage आएगा. So the voltage is something like here. I'm just so you can draw this. And the voltage is total. Here same voltage. This voltage, for example, 5 volts. इधर है ना? So the voltage is more. ये वाला 5 है. This is 7.5. इधर same C1 coil का 5 volts आएगा. This is 5, 7.5. Example दे रहा हूँ. When both are combined, you get a more voltage. Less. And this is how the voltage is there. You can see this one. The voltage obtained is a pulsated DC. Definitely, ये वाला waveform है ना? Definitely more अच्छा लग रहा है दिखने में compared to the one coil. Then if more coils are added, this is for 2 coil scenario.
two coils are connected. So another one, EBB1, B2, what if more coils are added here now? For example, more coils added, so more commutator segments, so voltage क्या होगा? बढ़ेगा. And then ripples also kind of like this. You can see same within 360, magnitude get increases, and you see the ripple something like this here. So this is the voltage you can see approximate as a DC voltage here now. But actually inside you have a ripples. I hope you understand this point. So two coils are added. You can see here now the 4 ripples here now. Then if there are 10, 20 ripples with the maximum minimum. So I want to define one more point, ripple voltage. This is V max minus V minimum. इधर का one coil में क्या हो गया? One coil में ripple voltage. Tell me now, one coil ये वाला है, two coil वाला, this is the two coil one, and M coil one, this is, इन दोनों में one coil में, दो coil में ripple voltage किसका scenario में ज्यादा है? This is V max, this is V minimum. इसमें V max ये वाला है, ये वाला V minimum है. So आप बता देना ripple voltage कौन सा coil scenario में ज्यादा होगा? One coil में, दो coil में. In which scenario? हाँ, कौन सा coil में? फर्स्ट सिंगल कॉइल वाला है. सिंगल कॉइल में. अच्छा है, तो मतलब लेकिन हमारा रिपल वोल्टेज कम होना चाहिए, क्योंकि डीसी में क्या है? दिस इज द डीसी, दिस इज द वोल्टेज VB1 V2. सो इसमें मैक्स माइनस मिनिमम 0 होना चाहिए, ऑलवेज सेम वैल्यू होना चाहिए. सो रिपल वोल्टेज हैज टू बी रिड्यूस्ड. सो व्हेन द मोर कॉइल्स आर एडेड, रिपल वोल्टेज रिड्यूसेस हियर. समझ गए बात? सो आर्मेचर में, सो कंक्लूजन क्या है? आर्मेचर में ज्यादा कॉइल्स रखना चाहिए ताकि आपका रिपल वोल्टेज इज रिड्यूस्ड एंड द कॉइल इज टुवर्ड्स द और वोल्टेज इज टुवर्ड्स द डीसी. समझ में आ गए? सो प्लीज मेंशन दैट पॉइंट. इफ मोर कॉइल्स आर एडेड ऑन द आर्मेचर and seriously connected, more coils are added on the armature and are seriously connected, ripple voltage decreases. Ripple voltage is decreases and the waveform is more like a DC. So waveform is more like a DC. Okay. So how to actually connect all these? मैंने बताया यार, यार दो coil connect करो series में, so 6 coil करो, 8 coil करो. So how do we connect here now? This properly connection of all these conductors or coils is called winding. So let us see that winding here now. So ये वाला कैसे winding कर सकते हैं? So I just want to see here now. ठीक है? So let me do the lap winding first one, and then we'll go to wave winding. Okay, just copy this, please. So let us see here now. I'll take here now first one, lap winding. So lap winding, if you take the first one, total number of conductors are 8. 8 conductors में कितना coils है? Coils are 4. 8 conductor means, okay. And the poles are 2. Then how to do this winding here now? How the lap winding can be connected here? मतलब, let us see here now. I'm just having a connection. Poles इधर है, north and south pole. So armature इधर रखो. So conductors, 8 conductors बता दिया ना.
So 1 by 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. You can give the numbers if you want. 5, 6, 7, 8. Okay. So what I'm doing here now, commutator segment भी होना चाहिए. Front side commutator segment आएगा. So I'll keep the commutator segment here. So ये सब कुछ coils है ना, conductors है ना, commutator segment को connect करना, commutator segment के ऊपर brushes पे connect करना. So how do you do this? Let us see here. So this one, what I do, आपको क्या front side में दिखा रहा हूँ. So मतलब this is how the connection. ये वाला cylindrical, you got this picture, right? ये वाला cylindrical structure है. Cylindrical structure I'm showing. Let me, if I have anything rule supply. I don't have anything. So for example, this is the one. Okay, look at here. So this is the one. Can you see me? Yes, sir. Yeah, दिखा रहे हैं ना? ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine then. So what I'm saying here now, for example, this is a cylindrical structure, rotor है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका पहले थोड़ा सर्कुलर वाला commutator segment इधर रखा. This is a commutator segment. इसका ऊपर कंडक्ट्स रखा, 1 2 3 4 8 तक कंडक्ट्स रखा और आगे कम्यूटेटर सेगमेंट है. तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ एक्सियली. सो लाइक दिस आई एम जस्ट कटिंग इट, इवन द कम्यूटेटर सेगमेंट आल्सो कट कर दिया. तो कट करके आई जस्ट कीप लाइक दिस वर्टिकली. तो आपको क्या दिखेगा? कंडक्टर्स 1 2 3 4 और पहले इसको भी कट कर दिया ना, कम्यूटेटर सेगमेंट को भी, ये भी इसका वाइड करके इस प्लेन रखना चाहिए. So this is what I'm drawing here now. Let us see here. So I'm drawing this 8 conductors. So 1 2 3 4. Okay, so numbers there. So इसको कट करके आगे भी कम्यूटेटर सेगमेंट है. कम्यूटेटर्स कम्यूटेटर सेगमेंट होगा. कितना सेगमेंट होना चाहिए? मतलब this number is number of commutator segments are equal to number of coils. So this is 1 2 3 4 है. So इससे पहले मैंने बताया तो एक सेगमेंट दो सेगमेंट कर दिए एक कॉइल को, लेकिन when you make the actual connection one coil should have one segment only. So 1 2 3 4. ठीक है, समझ गए ना? ये वाला बैंगल स्ट्रक्चर है. बैंगल स्ट्रक्चर को मैंने कट करके लीनियरली प्लेस कर रहा हूँ. कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर ब्रश होगा. मैंने बता दिया ये वाला कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसके ऊपर ब्रश रखना चाहिए. आर्मेचर कम्यूटेटर सेगमेंट सब कुछ रोटेट हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो भी ब्रश रखा है ये वाला तो फिक्स्ड है, स्टेशनरी. सो व्हाट हैपेंस हियर नाउ, फॉर दिस आई नीड टू हैव सम वाइंडिंग टेबल. ये तो ओपन रखा है अभी. सो कनेक्शन करना है, सीरियसली कनेक्शन करना है, इसके लिए तो वाइंडिंग टेबल. व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग टेबल? वाइंडिंग टेबल ये वाला फ्रंट साइड है, डेफिनेटली दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज अ बैक साइड. सो फ्रंट साइड में क्या कर रहे हैं, एंड दिस इज बैक साइड. So front side, back side 1 plus. For this one, I need to define something here is pitch factor and back pitch, YB value, YF value, back pitch and front pitch, something like this. Let me define this. I am defining back pitch, some terminologies. YB, which is equal to Z by P plus or minus 1. YF is Z by P plus or minus 1, or minus or plus 1. So what do you mean by this? YB is back pitch and YF is front pitch. This is back pitch, YF is front pitch here now. इसका वैल्यू क्या होगा? 8 by number of poles are 2 plus 1 ले लो. I'm just taking a plus here now. So this becomes 5.
For this example, 8 by 2 minus 4 minus 1, this becomes 3. Another definition I want to make out here now, which is commutator pitch. Which is called YC. This value is plus or minus 1 actually. So YC means, I'll tell you the YC means एक coil के बीच में कितना commutator segments है. I'll explain this, don't worry, but for this I am taking YC equal to 1, which means simplex 1. I'll explain this, don't worry. पहले ये दोनों देख लेना. YB 5 आया, YF 3 आया. इसका मतलब क्या है? Back side में first conductor should be connected to YB value है ना 5. 1 plus 5 6th को connect करना है. Please understand carefully. First conductor is connected to 6th conductor. So इसका distance है ना जो भी आ गया है, this is called as a YB, back pitch. YB is 5. 1 plus 5 is equal to 6. ये दोनों का distance है ना 6 minus 1 which is equal to 5 is your YB. Okay, front side में क्या करना? Front side में 6th conductor है इधर, ठीक है? 3 है, तो आगे जाके वापस आना पड़ेगा. Something like here now. 5 steps forward. This is how we are doing. And come 3 steps backward. And again go 5 steps forward from here. And then come back again 3 steps backward. And again go 5 steps forward. This is how we are going. So the path is kind of going like this. 5 steps आगे, 3 steps पीछे, आगे, पीछे, आगे. So overall कैसे? So we are moving forward. So this is called progressive winding. If YB is greater than YF, this is called a progressive winding. लेकिन आगे जाके थोड़ा पीछे आ रहे हैं ना, इसलिए माइनस लेना चाहिए इधर. 6 minus 3 which is equal to 3 front side. मतलब आगे कनेक्शन कैसे होना चाहिए? 6th कंडक्टर फ्रंट साइड को कनेक्ट करना, लेकिन थ्रू कम्यूटेटर सेगमेंट. So first I have to start with the first commutator segment here, starting connection में. अभी करना क्या? 6th वाला कहाँ कनेक्ट करना? 6th वाला 6 minus 3 कंडक्टर को कनेक्ट करना है, इधर कनेक्ट करना है. लेकिन ये सीधा मत करो ऐसा. Always you should go front side to the commutator segment and to the conductor. So सीधा मत जाना ऐसा. पहले commutator segment के पास जाओ, commutator segment से so आप कंडक्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा. तो कौन सा कम्यूटेटर सेगमेंट को जाना है यार? 2 को जाना, 3 को जाना, 4 को जाना, कैसे पता चलेगा? That depends upon the commutator pitch. मैंने YC 1 दिया, तो आप क्या करना चाहिए? इधर 6th को 2 को कनेक्ट करना चाहिए, ताकि YC का डेफिनेशन मतलब एक कॉइल के बीच में, ये वाला एक कॉइल है ना, 1 and 6th become a 1 coil. This is 1 coil. मैंने बता दिया ऑलरेडी. 1 कंडक्टर 6th कंडक्टर, इनके बीच में कितना कम्यूटेटर सेगमेंट है? 2 minus 1 which is equal to 1. So that is YC equal to 1. So this is YC equal to 1. So now 6 is connected to 3rd and the back side again proceed the further. 3 plus 5, 8. 3 plus 5, 8. Then 8 minus 3, 5. 8 minus 3, 5. 5 सीधा मत जाओ, तो कहाँ जाना है? नेक्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट को जाना है. नेक्स्ट क्या है? 3 8 एक कॉइल है ना, 3 सेकंड को कनेक्ट कर दिया. सो 8 हैज टू गो टू 3rd कम्यूटेटर सेगमेंट. लेकिन कंडक्टर किसको जाना है? 5th को जाना है. अगेन नेक्स्ट वन, 5 plus 5 10 आएगा. 10th मतलब कौन सा कंडक्टर है? 8 के बाद 9 आएगा, 9 and 10. So for this 10 minus 8 2. So 5th conductor should be connected to 2nd conductor. So I'll make this. This is to see that 2nd conductor ऐसा connect कर सकते, लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लगेगा. So for this what I do, this is 2 2nd. I'll write here now from 5th. From 5th. Okay, fine. Then 10 minus 3 7.
मतलब ये सेकंड वाला फ्रंट साइड है ना, सो 10 - 2 सेकंड वाला 7th को कनेक्ट करना, लेकिन कौन सा कम्यूटेड सेगमेंट, सो इट हैज टू कनेक्ट टू 7, लेकिन कौन सा वाला बचा है इधर, 4th, सो आप सीधा इधर जाओ, इसको कनेक्ट करो बस। So then 7th one back side, 7 + 5 12, 12 means 12 - 8 4, so 7th is connected to this is 2, 4th, 4th कहाँ है, ये वाला 4th है from 7, please understand this, from 7th, ये वाला 7th है ना, डायरेक्टली आप 4th को कनेक्ट कर सकते सीधा ऐसा, लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लगे, सर्कुलर कनेक्शन है ना सब कुछ, इसलिए मैंने इधर जाएगा राउंड वाला है बस, प्लीज मेक श्योर दिस इज हाउ इट इज कनेक्शन, ये वाला सब कुछ राउंड है ना, इसलिए कट करके राउंड है, सो एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर है, दोनों कनेक्शन करेगी सर, अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली जॉइन लाइक दिस, बट वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, सो वन दिस वे एंड अनदर दिस वे, एंड दिस इज सर्कुलर वन, एंड okay fine, so then what happens, what is left here, to 7th and the front side में 4th वाला open है इधर, 4 - 3 1, just 4 - 3 1, इसको कनेक्ट करो बस, हो गया काम, again repeats 1 + 5, the same thing, so all coils are kind of joined here now, so the question is here, where the brushes are kept, कितना brushes रखना चाहिए and कहाँ रखना चाहिए, तो वाइंडिंग टेबल तो हो गया, बैक साइड फ्रंट साइड पहले वही भी कैलकुलेट कर दिया, वही एफ हो गया, वही सी दिया इधर, ठीक है, उसके हिसाब से वाइंडिंग टेबल कनेक्शन भी हो गया, ब्रशेस कहाँ रखना चाहिए, सो ब्रशेस रखना चाहिए जहां पे आपका करंट दोनों कंडक्टर, देखा इधर कम्यूटेटर सेगमेंट के पास 2 कंडक्टर पॉइंट कनेक्शन है, 2 कंडक्टर 2 कंडक्टर 2 कंडक्टर 2 कंडक्टर, एक कम्यूटेटर सेगमेंट के पास 2 कंडक्टर है और दो टर्मिनल्स आ रहे, 2 कनेक्शंस है इधर आप देख लेना कौन सा पोजीशन में दोनों को करंट एंटर हो रहे, अंदर आ रहे, नहीं तो दोनों को करंट बाहर जा रहे, उसका पोजीशन में आप ब्रशेस रखना चाहिए, उसके लिए करंट डायरेक्शन चाहिए, करंट डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, करंट डायरेक्शंस देखो इधर है ना करंट डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल रोटेट क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहे, दिस इज हाउ रोटेशन इज देयर, क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहे, टेल मी नाउ 1 2 3 4 नॉर्थ पोल के नीचे 1 2 3 4 का करंट डायरेक्शन कैसे होगा, टेल मी नाउ, यूज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सो 1 2 3 4 डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगा, 5 6 7 8 दूसरा डायरेक्शन में हो जाएगा, टेल मी नाउ 1 2 3 4 कैसे होगा, हमने बताया ऑलरेडी, नॉर्थ पोल के नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे कंडक्टर्स, सो ईएमएफ कैसे होगा, एनीवन, कैन समवन टेल मी, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, वेटिंग फॉर योर आंसर, 2 ही ऑप्शन है, इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन, अंदर जाएगा बाहर आएगा, इनटू डालना, क्रॉस डालना या फिर डॉट डालना, FRH important for your gate, Fleming's right hand rule, अरे वेटिंग फॉर योर आंसर, समझ में आ रहा है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रोटर डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही, मैग्नेटिक पोल्स इधर है, तो ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल 4 फिंगर फील्ड डायरेक्शन है, सो 4 फिंगर फील्ड डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है, एंड द रोटेशन, रोटर का रोटेशन ऊपर जा रहे क्लॉकवाइज में, सेंटर फिंगर इधर है नॉर्थ पोल के नीचे, तो क्या है इसका डायरेक्शन, व्हाट इज दिस वन, इसका डायरेक्शन क्या है, into the plane, this is into the plane and this is out of the plane, Fleming's right, this is important, if you don't understand so please check with me, okay fine, so ये वाला into the plane है, समित क्या है, करंट एंड साइड जाएगा,
आप बोल देना क्या है, मतलब इस समझ में नहीं है वाला। करंट अंदर जाएगा, या दैट्स करेक्ट, या अंदर जाएगा, ओके एंड नहीं अंदर जाएगा, दैट्स करेक्ट, या करंट अंदर जाएगा, अंदर जाने वाला करंट बाहर आना चाहिए साउथ पोल के नीचे, दैट्स करेक्ट। सो दिस इज इनटू द प्लेन, ये वाला करंट डायरेक्शन, ये वाला आउट ऑफ द प्लेन 5 6 7। सो अभी देख लेना, अभी एरोस मैंने दिया डायरेक्शंस, कहाँ कौन सा पोजीशन में दोनों करंट सेंटर हो रही है, दोनों करंट कौन सा पोजीशन में अंदर आ रहे हैं बता देना। 1 2 3 4 में दो कंडक्टर आएगा ना एक एक पोजीशन में, सो कौन सा पोजीशन में आपका करंट अंदर आ रहा है, कैन समवन टेल मी। ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, आप देख के बताना पड़ेगा बस, कौन सा पोजीशन में, कौन सा पोजीशन में दोनों कंडक्टर का डायरेक्शन अंदर आ रहे हैं। देखो इधर क्या है, इधर क्या है, देखो इधर क्या है, इधर क्या है, समझ में आ रहा है ना। इधर दो कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, इधर एक कंडक्टर इधर है, एक कंडक्टर इधर है, इधर क्या है, इधर एक है, इधर ये वाला है। सो अगर थर्ड में देख लिया तो 5 is entering and 7 is entering, so एक ब्रश I'll keep it at 1 third, so बाहर आएगा। दूसरा पोजीशन बाहर आ रहा है ना, करंट अंदर जाना चाहिए, इधर देखो 1 में करंट अंदर जा रहे, करंट अंदर जा रहे, दो कंडक्टर, सो इधर एक ब्रश रखना चाहिए। So this is where, and I have a load here now connected. So whatever the current brushes से बाहर आएगा, that is called IA. This is IA, load में जाएगा अंदर, and it get divided. This becomes IA by 2, and इधर IA by 2. समझ गए ना, ये वाला IA by 2, this is IA by 2. What is this? 8, right? 5 and 8. राइट, बाकी पोजीशन है दो में, देखो दो में क्या हो रहा है, सिक्स्थ का करंट आ रहा है, ये वाला करंट थर्ड में बाहर जा रहे, ये करंट अंदर आ रहा है और थर्ड बाहर जा रहे। सो अगर ब्रश रख दिया तो फिर भी करंट नहीं मिलेगा, सो रखने की जरूरत नहीं, सो नॉट नीडेड हियर नाउ। सो इन लैप वाइंडिंग व्हाट वी आर डूइंग इज, इन लैप वाइंडिंग, सो द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स or number of brushes are equal to number of poles here. Now I repeat the point, number of brushes or number of parallel paths. So what is the number of parallel paths? I'll tell you. First write the number of brushes equal to number of poles. So जितना poles है हमारा पास उतना brushes आएगा, इधर दो brushes है। अगर poles ज्यादा हुआ तो parallel path भी ज्यादा होगा। What do you mean by a parallel path here now? First copy this, I move on to the parallel path. कॉपी कर दिया, so write down if YC equal to 1 plus 1 progressive winding, otherwise retrogressive winding. YC plus 1 हुआ तो progressive, otherwise retrogressive, मतलब आगे जाएगा नहीं तो पीछे जाएगा। That is YF is greater than YB, YC is plus 1, so this is progressive. Otherwise YF is less than YB, then YC equal to minus 1. This is retrogressive winding. मतलब winding is like this, it's going, 1 is connected to 6, 6 is 3, 3 is kind of 8. Winding is going like this. Progressive में, retrogressive में क्या होगा? 3 steps forward, 5 steps backward, 3 steps forward, 5 steps backward, 3 steps forward, 5 steps backward, like this. It's a retrogressive. Then if you see the number of parallel paths, what do you mean by number of parallel paths or parallel paths?
So look at here now. This is important. So ये वाला है ना, अंदर जो भी करंट है ऑल्टरनेटिंग एसी करंट है, इधर कॉम्यूटेटर है, ब्रशेस के बाहर डीसी आ जाएगा, एसी टू डीसी कन्वर्शन हो गया. सिंस इधर एसी है, I can represent the conductor, each conductor as a coil also, मतलब इंडक्टर जैसे. Tell me now one conductor, first conductor, I'm just connecting first conductor as a coil or a inductor. First is connected to. Tell me now, first वाला conductor है ना, कौन सा conductor कनेक्ट कर दिया है? First one, कौन सा conductor कनेक्शन कर दिया मैंने? कनेक्शन किसको दिया? किसको? कौन सा नंबर क्या है वाला? अरे सो रही क्या? Six, sir. हाँ? 6 number, sir. 6, very good. One is, please respond at least sometimes so that I feel that people are there. So one is connected to 6th. 6th is connected to कौन सा connector है? 6th is here now connected to say commutated segment, वो छोड़ दे. लेकिन 6 is connected कौन सा conductor है बताओ? 6 is connected to 2. Three, sir. ये देखो इधर देखो आपको पता चले. 1 is connected to 6, 6 is connected to 3, 3 is connected to 8, 8 is connected to 5, 5 is connected to 10, 10 is connected to 7, and then 7 is connected to 4, 4 is connected to 1. Sequence. So tell me the sequence now. 1 is connected to 6. 6th वाला किसको connection है? What is the other one? 6 is connected to 3. 3, nice. And next 3 is connected to 8. yes, good. And 8 वाला 5. 5, nice. And 5 वाला 10. 10 मतलब Two, sir. 2, 2. nice. 2 वाला Seven, sir. 7, okay, nice. 7 वाला Four, sir. 4, 4 वाला 1. 1. Look at here now. So it's a circular winding, closed winding. So important point is here now. DC winding is a closed winding. DC machine winding is a closed winding. You can see here now. Winding is closed. So now अभी brushes कहाँ रख दिया मैंने? Brushes commutated segment 1 मतलब कौन सा conductor के बीच में? 1 और 4. 1 conductor 4th conductor के बीच में मतलब मेरा brush इधर connection है. ठीक है? This is one brush. I call say maybe B1, whatever is up to B2 here. This is B1. दूसरा ब्रश कहाँ रखा? दूसरा ब्रश is at 3. 3 means कौन सा वाला position? 3 के पास कौन आ रहा है? This is 1 is 5 and 8. 5 and 8 के बीच में. So another brush is here. B2 here. So B2 के बाहर current आ रहा है. B2 के बाहर current आ रहा है. So this current is IA. Now I told you this is connected to load. ठीक है? ये वाला है ना? So this is connected to load and some load is kept. Resistance है. Load मतलब resistance है. So IA आएगा, load को जाएगा here and the current will come to B1 अंदर जाएगा. So ये वाला current आ रहा है ना? Now these are parallel paths. मतलब 1, 6, 3, 8. Let me redraw it properly. दोनों पैरेलल है. ब्रशेस के उस तरफ वाला इस तरफ वाला पैरेलल है ना. So I'm just redrawing that. So 1 coil, 2, 3, 4. 1, 6 numbers and it no matter. 2, 3, 4. इधर एक ब्रश रखा है ना. This is the brush, no problem. Current is entering IA. Current बाहर आ रहा है IA. So क्या what will happen? Equal है ना?
चार कॉइल से रेसिस्टेंस आर इक्वल. मान लो दिस इज 1 ohm, 1 ohm, 4 ohm, 4 ohm. So current will be divided into IA by 2. So you can see here now voltage across the brushes. Voltage across the brushes. This is the voltage across the brushes. That is what is induced EMF. Voltage across the brush is because of what? एक voltage induced in the conductor. इधर एक voltage आएगा, इधर एक voltage, इधर एक voltage आएगा. So चार conductor में जो भी voltage आ रहा है वही voltage, not in the 8 conductors. 8 conductors में voltage आ रहे, लेकिन हमको मिल रहे चार कंडक्टर में जितना वोल्टेज आए उतना ही मिलेगा क्योंकि पैरेलल पाथ्स है. So the voltage is across 1638 or this 425, 475, 4725 voltage. This is the voltage which is kind of induced here now. And the current is I. So power rating is P, which is equal to E into IA. Power rating is E into IA here now for this machine here now. What should I do here now? Current rating IA by 2, IA by 2, total rating is IA here now. Now, when you increase the number of parallel paths by increasing the number of poles increase कर दिया, तो what will happen here? अगर आप मान लो poles को increase कर दिया, तो इसमें current carrying capability मान लो 5 amps है, IA by 2 is 5. Poles increase कर दिया तो parallel paths भी बढ़ेगा. Parallel paths बढ़ेगा मतलब 4 poles में 4 parallel path आएगा. तो what will happen here now? एक parallel path में कितना conductors होगा? अभी 2 pole हुआ तो 2 parallel path आ गया. So first let me write it here now. Number of parallel paths. कितना है इधर? 1, 2 equal to number of poles. If poles are 4 and parallel path get increases, then what will happen here now? Voltage rating decreases. समझ गए ना? If P equal to 4, this is P equal to 2. P equal to 4 आ गया तो क्या हो गया? Parallel path क्या हो गया? Let us see this one. 4 आना चाहिए. 2 coil, 2 conductor एक parallel path में. समझ गए ना बात? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. अभी वोल्टेज क्या हो गया इसका बीच में? Voltage is because of only 2 conductors, not because of all. So voltage क्या हो गया? कम हो गया अभी. So as the number of poles increases, voltage is decreases, but the current यानी इसमें कितना जाएगा? इसमें डबल हो जाए. IA by 2 मतलब पहले मान लो 5 amps जा रहा था, अभी 5 जाएगा, 5 जाएगा, 5 जाएगा, 5 जाएगा. मान लो इधर 5 and 5 10 amps आएगा, इधर 5, 5, 5, 5 20 amps आएगा. So voltage rating decreases, but current rating increases when the number of poles are increased. Okay, please write that point here now. As the number of poles increases, number of parallel paths increases. As the number of poles increases, number of parallel paths increases. For a given number of conductors, with increase of poles, voltage rating decreases, current rating increases, but power rating remains constant. There is a gate problem, we'll solve that later anyway. Let us move on here now.
Okay, another one, similarly, there is a wave winding also. Another second one is kind of wave winding. So wave winding, how do we make this? YB, YC, and YF all are equal to 2 plus or minus 1 by P. इसे आप ले सकते हैं मतलब back pitch, front pitch, and commutator pitch is 2 into C plus or minus 1 by P. C is number of coils and P equal to number of poles. So similarly, we can have it. The winding is same, whatever we have done. But the critical point of this one is number of parallel paths. Number of parallel paths or number of brushes. Always 2 here now. And even number of parallel paths also 2 always. Irrespective of the number of poles, he mentioned this point. Number of brushes and number of parallel paths are always 2, irrespective of the number of poles. Mention that point. Number of brushes, number of parallel paths are always 2, irrespective of number of poles. तो क्या है always 2 मतलब 2 हुआ तो मतलब ये वाला simplex wave winding है. If it is multiplex winding, it becomes 2m. That's a different story. Simplex मतलब 2 आएगा, where YC equal to kind of 1 in simplex lap winding, where YC equal to this one here. So always parallel paths are 2 means इसका rating क्या होगा? 2 parallel path मतलब ज़्यादा से ज़्यादा conductor divided equally in 2 parts, 2 parallel paths. So more voltage, E will be more and I will be less in case of wave winding. High voltage, low current applications, wave winding is used. Since lap winding में ज़्यादा parallel path आएगा, तो ज़्यादा parallel path आएगा मतलब एक parallel path में कम conductors मिलेगा, तो voltage कम ही मिलेगा उधर. So lap winding is used for low voltage and high current application. This is the lap, whereas the wave is used for high voltage, low current application. Please mention that point. Note. Wave winding machines are used. Wave winding machines are used. Wave winding machines are used in high voltage, low current application. High voltage, low current application. Whereas lap winding machines are used. Lap winding machines are used in low voltage, high current applications. Okay. Yeah, this is about the winding part. Next topic is very important one, is armature reaction. What is armature reaction? ये वाला armature reaction है ना, not only here in DC machine, even AC machines, synchronous machines also will obtain. So it is good you understand better in the DC machine itself. Armature reaction. What is this armature reaction? Let us see. I have a DC machine. North and South Pole, and for example, conductor is here now. Though conductors, but yeah, just one conductor. I'm saying A into the plane. So the rotation is like this.
A is going into the plane. And what about this one? When the fluxes are here now, north to south, then the rotor is rotating in clockwise direction. This is rotating at a speed of n. So according to FRH, current is going here now. But I know this, the current carrying conductor will generate a flux. So this is the one which is generating a flux, conductor. This is the conductor here now, and it's going inside. Current is going inside. So around magnetic flux aa jayega. According to right hand grip rule, magnetic flux lines are produced around the current carrying conductor. We know that one. So kaise aa jayega yaar? So how do you know this direction here now? So look at this. Current carrying conductor idhar hai. मान लो मेरा conductor अंदर है. So current अंदर जा रहा है. So to know the direction of the flux lines, hold the current carrying conductor. Don't really hold it, right? Just imagination. Everything is imagination. So thumb direction, है ना? Current का direction thumb में रख देना और curling finger जो भी है ना, ये fingers आपका fingers flux का direction में आ जाएगा. So in this case, thumb अंदर जा रहे, curling fingers ऐसा. So I'm just showing here now. This is how the flux lines will be there. In the direction of the flux lines like this. Do you agree with me? लेकिन हमारा main flux है ना, main flux भी है. So this is how the main flux lines are there, north to south. ये वाला main flux है. So what is happening here now? So in this case, totally main flux is here now, interaction of the main flux. This is a main flux. I'm just showing here. मान लो 5 flux line, this is 5F. Red lines are armature flux. Armature flux lines you can see here. This is going up, this is left to right, this is down and here now. So this is how we are going. So now what is armature reaction is? Armature reaction is impact of the armature flux, impact of armature flux on the main flux. मतलब ये वाला armature flux है ना, जो भी extra flux आ गया, इसका impact main flux के ऊपर कैसे हो जाएगा? Main flux के ऊपर कैसे आ जाएगा? That is armature reaction. इसका impact क्या है? अलग अलग होगा डायरेक्शन में. मान लो ये वाला region 1 है, अलग अलग regions ले रहा हूँ मैंने. This is say 1, 2nd and 3, 4th places. Region 1 में कैसे होगा direction here? Now let us see. Region 1, main flux is kind of going in this direction, left to right. This is how the main flux lines are going. ये वाला है ना, armature flux lines opposite direction में आ रहे. So this is how opposite direction में आ रहे. This is phi r. Resultant flux क्या हो गया? What will happen here? Resultant flux here no? Resultant flux कम हो जाएगा. Resultant phi r is kind of reduces. So this impact is called as a, this effect is called as a demagnetizing effect. This is called as a demagnetizing. Demagnetizing or DM. So in the region 2, very important one, region 2 में क्या हो रहा है इधर? So main flux left to right में जा रहे. This is how it's going. Armature flux है ना, ऊपर जा रहे. This is phi r, ऊपर जा रहे हैं ना. So what is impact here now? The impact is main flux lines will bend down. क्योंकि flux lines are elastic in nature. Elastic है मतलब your plastic, elastic, you know the elastic rubber band. Rubber band, if you kind of pull towards you, then it will go back again. If you release it, elastic nature, elasticity. So then what will happen here? ये वाला push करेगा, so हमारा blue lines ऊपर जाएगा. This is how the flux lines will be. क्योंकि आपका push इधर है. So this is where the red line is being pushed. This is where the red line is pushed, phi r armature. So the resultant, this is what the phi r.
So this impact is called as a cross magnetizing effect. CM cross magnetizing. And again region 3 में क्या है ये वाला, you can see here main flux this and armature flux also going in the same direction. So look at here now, main flux is here, phi f, armature flux it seems going in the same direction. This is phi r. ये वाला है ना, although it looks like a magnetizing, this looks like a magnetizing, but magnetizing effect, but increase of a flux length will not happen due to saturation. मतलब क्या है, saturation का मतलब क्या है, already ये वाला maximum flux length मिला, मान लो 5 वेबर चाहिए, 5 वेबर तो हाई, so abundant मिला अभी, तो ये नहीं ले सकते, मशीन नहीं ले सकते, ज्यादा मिला. Something like you had a lunch, very good lunch, lunch यानी खाना खाने के बाद और आपको best food मिला और कुछ और मतलब ज्यादा मिला खाने के लिए, so but you can't take it because you already saturated. मशीन का हालत भी वैसा है, इधर ज्यादा फ्लक्स है इसके पास, मतलब ऑलरेडी सैचुरेटेड है मशीन, अगर ज्यादा फ्लक्स लेंथ मिला तो फिर भी मशीन नहीं ले सकते. So you cannot get a more flux lengths here now in the magnetizing. So we'll just ignore this one, no effect or magnetizing effect is not complete here now. Region 4 में main flux lines are here and you can see here armature flux lines are pushing down. This is how the armature flux lines. So resultant कैसा आएगा, resultant flux lines will be going down क्योंकि इसको push कर रहे हैं ना. This is a resultant phi r. So now region, what are the impacts here now? Region 2 and region 4 are cross magnetizing and this one is demagnetizing and ये वाला magnetizing, लेकिन ये वाला complete नहीं होगा. तो overall 1 and 2, overall 1 and 3 regions will give you a demagnetizing effect, I would say. Region 2 and 4 will give a cross magnetizing. समझ गए ना बात? So armature reaction has two impacts here now. You can mention this point. Armature reaction has two impacts. Armature reaction has two impacts. One is demagnetizing effect. One is demagnetizing effect. Other one is cross magnetizing effect. Other one is cross magnetizing effect. Okay. Demagnetizing effect reduce the magnetic flux. Demagnetizing effect reduces the magnetic flux. Hence the voltage is reduced. Hence the voltage is reduced. Induced voltage. In cross magnetic effect, main magnetic flux is get deviated. Main magnetic flux densities get deviated, and following demerits are obtained. Following demerits, meaning what are the disadvantages of cross flux or armature reaction, rather I would say. Okay, so what is happening here now? If we draw the armature reaction cross flux CM effect, what is happening here now? Let us see. Resultant flux lines are one side pushing up, other side pushing down. So your armature
resultant flux is something like this. So this is your actual phi r, which is field flux and armature flux, dono, cross flux. So what is happening here now? Crowding is occurring here now. This is a trailing pole tip. This is called leading pole tip. Okay? And this is trailing pole tip. This is leading pole tip. मतलब armature is rotating like this. Wherever the armature enter होगा, जहाँ पे armature enter होगा, that is called leading pole tip by. जहाँ पे leaving होगा, बाहर से निकलेगा, by बोलेगा, that is a trailing pole tip. And इधर armature enter होगा इधर, so leading हो गया बना, you are trailing है. So you see the crowding of the flux lines. Yet trailing pole tip. This is asked in examination. So crowding occurs at the trailing pole tip. तो क्या है, दिक्कत क्या है? So what are the demerits here now? Demerits of cross flux. Most of the things are armature reaction में cross flux है, cross magnetizing. Demagnetizing, very less impact. थोड़ा सा कम voltage मिलेगा, but that is not a major disadvantage. The disadvantages are huge in case of the cross flux. The first one is kind of iron loss increases. I'll explain all these things later, but please write down. So second one is sparking. ये सब कुछ आपको commutation में मिलेगा. Sparking at brushes. And third one is kind of commutation. Commutation problems. Just because of the cross flux armature reaction, and we get iron loss increases, sparking at brushes, and the commutation problems occurs here. All these I'll explain in the commutation process, commutation of DC machine or DC generator. We'll see here now. Okay. But I would like to see the shape of the magnetic flux densities here now. I'll give the things here. Armature reaction में, so what are the shapes? Main magnetic flux density shape कैसे होगा? Armature flux का shape कैसे होगा? Field flux. What are these involved here now? Field flux है, armature flux है, resultant flux भी है. So ये वाला trailing pole tip में. Let us do that one and how the shape will be there here. So for this, ये copy कर दिया आपने? I'm just writing here now field fluxes. Field flux or main flux density. This is flat topped. Okay, main magnetic flux density. Armature flux or armature MMF. Armature MMF. ये वाला triangular or stepped or sinusoidal. MMF, FER के बारे में बात कर रहे हैं. Or phi AR also, armature flux also. Resultant of these two. Phi AR. This is phi AR is saddle shaped. Phi AR is saddle shaped here. One is a field flux, is a flat top. Armature MMF is triangular or stepped or sinusoidal, whatever the option they have given. And armature flux is saddle shaped here. Now, saddle shaped means something like this. This is something like this is the way we'll obtain here now. Saddle shaped armature flux. I'll show you here now. Anyway, since let me quickly draw that one. How this is explained. ये वाला ये देख लेना.
So ये वाला waveform, this is what I'm drawing here now. Just let me clear this and draw this one. How the waveforms are there. This is a north pole. The shape I'm drawing, this is north and south. This is the magnetic neutral axis. And this is also magnetic neutral axis. Waveforms, and I'm just trying to draw the waveforms. Whatever I have mentioned, I'll be doing that. So first one is field flux, main flux density. See, this is what I'm doing. इधर है ना, this is north and south. ये वाला neutral axis cut कर दिया. So इधर अंदर armature है, ये सब कुछ, ये वाला armature है. And this is field flux, phi f दोनों. So field flux, ये north and south pole से कैसे field flux आएगा? I told you flat top or sinusoidal. Flat top मतलब something like this. This is how it will be, phi f. Then the armature MMF. I'll show you the armature MMF, how it looks like. So नॉर्थ पोल के नीचे जो भी कंडक्टर्स रखा, से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. The direct rotation is clockwise. कंडक्टर का, आर्मेचर का, this is into the plane. नॉर्थ पोल वाला, you're out of the plane. See, already I explained. See, the conductor say this is what I'm taking. ये वाला into the plane होगा, सब कुछ ये out of the plane होगा, provided this is the way. So now MMF, armature MMF will be, look at here now. If one coil is there, मान लो ये वाला north pole है, south pole है. One coil is there, ये वाला into the plane होगा, out of the plane होगा. मतलब this is into the plane, out of the plane. So if you draw on the x-axis kind of thing, this MMF is, armature MMF is constant here, from here to here. Same current will go, right? Same current will go. Current into number of turns is MMF. Ni इधर है, Ni इधर है. Throughout this degree, ये वाला मान लो 180 degree है. So from here to here, same MMF है. This is MMF. If two conductors are placed or two coils are placed, one more is here now. This is into the plane, out of the plane. This is मान लो BB dash. So what will happen? थोड़ा displacement आएगा. So this is into the plane, out of the plane. So this is, say, first conductor AA dash, second one BB dash के लिए, इसका MMF क्या है? थोड़ा distance आगे गया ना? So what will happen here? थोड़ा आगे जाएगा. So this is BB dash, this is theta, and this is pi plus theta. ये दोनों combine करो, मान लो ये वाला Ni है, ये वाला Ni है, MMF. So what will happen? ये अगर ये दोनों combine कर दिया तो careful here now. Total MMF कितना है? 0 to theta. Ni A से आएगा, B से 0 आएगा. So I can have this one as Ni, no problem, theta तक. थीटा का बाद क्या होगा? Ni इधर है, Ni इधर है, 2 Ni. ज्यादा हो गया. कहाँ तक? पाई तक. पाई के बाद Ni है. So this is 2 Ni combination. This is Ni and Ni here now. समझ गए ना बात? So MMF of single coil is triangular, rectangle. MMF of a two coil is, देखा इधर, MMF of a two coil is, you can say stepped waveform. Such coils I have 7 coils I have. Here only 2 coils are kept, so the waveform is like this. 2 coils रखा तो waveform ऐसा है. So मैंने 7 coil रखा है इधर. So waveform, look at here now, waveform. I'm just drawing randomly.
Okay, 1 2 3, 1 2 3. Okay, and then here similarly same thing, 2 1 2, like this. So this is the whatever I have drawn is a kind of MMF waveform. ये वाला field flux है, this is what the phi f और BF. From here now stepped waveform, 2 coil में ऐसा आएगा, so 7 coil में ऐसा आ जाएगा. So MMF is, so I just join this point. This is the point. This is the stepped waveform. This is FAR. Flux कैसे होगा यार? Flux is here now. This is armature flux. You can see under the north pole. Exactly. This one it becomes 0. And neutral axis में ना, neutral axis में आपका flux is very less. And then this is how it is. This is called as a saddle shape. Neutral axis में armature flux कम होगा. Armature flux is kind of less. That's the reason you see a saddle shape. This is phi AR. Green line is phi AR. FAR. So as I mentioned, phi F is of flat top and FAR is of stepped or triangular or sine, and corresponding flux phi AR. These are asked. Saddle shape. Saddle मतलब ये वाला है, साइकिल में बाइक में बैठा हो तो बैठने के लिए अच्छा लगेगा ना, ये बैठने के लिए अच्छा लगेगा वाला. So in horse riding also you see something like this. That is called saddle shape. Fine. Now the combine these two, phi F and phi AR combine करके एक waveform draw करना. That is the resultant one. So armature reaction. What is armature reaction? Armature reaction is phi F plus phi AR. Phi F इधर है, phi AR green है. So दोनों combine करके draw करोगे waveform. I'm just drawing here. So this is a trailing pole tip. Trailing pole tip में ज़्यादा flux आएगा. Just trying to addition करो. Positive है, negative है. थोड़ा सा positive. So you feel slightly kind of negative here now. So yes, from here it's a kind of increasing. ये वाला trailing pole tip इधर ज़्यादा flux है, resultant flux ऐसा आएगा. मैंने बताया. ठीक है? So in the trailing pole tip, you get more flux. Now this is no more a magnet neutral axis. Look at here now. And then this is the neutral axis now. This is your previously magnet neutral axis. Now this is the magnet neutral axis. I'll tell you the reason also here now. Please understand, without armature reaction, if you have no armature reaction, neutral axis कहाँ होगा? Neutral axis मतलब जहाँ पे आपको magnetism नहीं होगा. This is a neutral axis. And this is a magnetic axis. This is magnetic axis. This is magnet neutral axis. This is without armature reaction. अभी क्या हो गया? अभी मैग्नेटिक एक्सिस ये वाला मैग्नेटिक एक्सिस है ना, फ्लक्स डिविएट हो गया, फ्लक्स इधर से आ रहे फ्लक्स. सो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा? इसका न्यूट्रल, दिस इज एमए नाउ, मैग्नेटिक एक्सिस, क्योंकि फ्लक्स इधर से आ रहे. न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा? हियर द न्यूट्रल एक्सिस आई हैव, दिस इज एमएनए. सो बीच में है ना ये वाला न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में फ्लक्स होगा. सो दिस प्रीवियसली इट वाज न्यूट्रल एक्सिस, बट अभी न्यूट्रल एक्सिस हो गया, लेकिन हमारा ब्रशेस पहले इधर रखा है. सो दिस इज नो मोर ए zero flux position. So that's what you can see. This is the one. There is a shift in the brush. You can. This is theta. Brush has to be shifted here now to make it without sparking. Anyway, let me finish this.
This is the one. See, this is a crowding of this one. Here, more flux. Crowding of flux means here more flux. So this position is, you can see here now, this is new MNA. This point is old MNA. ये वाला position है ना, old MNA. So the shift in MNA. So because of armature reaction, there is a shift in the MNA. So that brushes have to be shifted in the direction. You please mention that point. You please mention that point. Due to armature reaction, MNA is shifted in the direction of rotor. Due to armature reaction, MNA is shifted in the direction of rotor. Hence, brushes have to be shifted by theta. Hence, brushes have to be shifted by theta to make sparklets at the brushes. To make sparklets at the brushes. Okay. Yeah, my intention is to say here now, ये वाला points, ये वाला है ना, shape of the waveforms I would like to mention. I know, yeah, I know this little bit dry you feel, but in fact these are important. The shapes, at least the names, important, and at least ये वाला है ना, at least make sure that MNA is shifted. And MNA the shift हो गया. You can make out this. So you can see this MNA has shifted here now. ये वाला. MA shifted to MNA shifted here now. So this is MA shifted, MNA shifted here. Brushes have to be kept here now in the direction of MNA only. So tomorrow we'll see here now. I know. So overall क्या disadvantage है? Armature reaction की वजह से disadvantage है. Disadvantage क्या है? मैंने बता दिया. Sparking आ जाएगा, commutation failure, commutation का problem आएगा, losses get increase होगा. ठीक है? तो इसको मिटिगेट करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, रेमेडीज क्या है हमारा पास, आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, वो बात क्या है कल हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, so stop here now. If you have any doubts just let me know. थोड़ा बहुत कल का क्लास से थोड़ा बहुत देख के आना, तो जो भी हमने डिस्कस करी थोड़ा बहुत देख लो. ठीक है, you have any doubts so that you can ask me. Okay, why this into the, I hope everything is linked. इधर कंडक्टर से into the plane है, FRH है, इधर ड्रॉ कर दिया. So ये वाला स्टेप कैसे आया, इधर से आया आपको. So then I have drawn here like this. Okay. So if you don't have any doubts, then you can meet tomorrow morning. Tomorrow morning be a power transcript. Okay, Master. Yeah. Thank you guys then. Okay, Sahu, Savikant Sahu, yeah, good then. Thank you then. Thank you, Savikant, Bhaskar, Amit, and others, and who are all there. Sujita is there. So class strength कितना है आपका class? Why the other people are not attending? Is there any reason, or they already studied GATE classes? Any reason other people are not attending?
See, you won't get these things, right? Even if you get in the material, self-explanation, self-learning becomes a bit time-taking, time-consuming. Right? अभी कॉलेज चल रहेगा आपको? कॉलेज फिजिकल अटेंड कर रहे हैं? नहीं सर. ऑनलाइन क्लास. Yes sir. Okay, fine then. Sure. Okay then. So see you then. See you tomorrow then. So okay. Thank you guys. Thank you. अच्छा एग्जाम्स है क्या? अमित कुछ एग्जाम्स है क्या? इसलिए तो अटेंड नहीं हो रहे. अच्छा ठीक है ठीक है. Okay fine. बस कर सुजीता. बाय.